बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। गजट शो के आज के इस प्रोग्राम के साथ मैं आपके सामने ये बताने के लिए कि गजट शो इट्सल्फ है क्या और इसमें हम क्या आपको बताने की कोशिश करते हैं कि दरअसल दुनिया में होने वाली टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट या जो एक्सप्लोर करके साइंटिस्ट या टेक्नोलॉजिस्ट जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं हमारी सहूलत के लिए, हम एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए या हमारी ज़िंदगियों को आसान बनाने के लिए, उसके हवाले से हम डिस्कस करते हैं। मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को हम एक्सप्लोर करते हैं ताकि आपको आसानी से ये बताया जा सके कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है और कब कब करना है। वगरना ये सारी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, ये टेक्नोलॉजी चंद एक मखसूस जनरेशन के हाथ में रह चुकी है और वो ही इसी से सिर्फ फ़ायदा और इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद DM के तवस्सुत से ख़ास तौर पे ये है कि उन टेक्नोलॉजी से तमाम लोग या हमारे व्यूवर्स अच्छी तरह से मुस्तफ़ीद हो सके। तो इस हवाले से हम स्टूडियो में ख़ास तौर पे दावत देते हैं जुमेरात के दिन, जो कि एक बड़े एक्सपीरियंस्ड एक बड़े एक्सपीरियंस्ड जिन्होंने मुख्तलिफ TV चैनल्स पे भी बड़े अच्छे तरीके से काम किया, जो इंडिया से हैं, जिनकी क्वालिफ़िकेशन भी इस हवाले से और बड़ा अच्छा एक्सपोजर है। शुक्रिया अदा करेंगे और स्टूडियो में खुश आमदीद कहते हैं हम सरदार रमनजीत सिंह को। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल सरदार जी, क्या हाल चाल है? आई एम वेरी गुड फ़हीम, आप कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। सरदार जी, पहले तो हमें ये बताएं ना कि आपके एक्सप्लोजर, ये शौक़ आपको कि आप हमारे एशियन कम्युनिटी की इतनी बड़ी सर्विस कर सकें कि उनको, दैट्स रियली ग्रेट दैट यू जस्ट ट्राइंग टू एजुकेट देम एंड ट्राइंग टू एक्सप्लोर डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर all kind of our Asian community here. That's really nice idea and I really very much appreciate that. But would you please like to क्या experience हमारा शोर करें कि एक्सपोजर क्या क्या है आपका, किस तरह आपने जाना और कैसे ये सर्विस कर रहे हैं? हमारे व्यूज़ को ये तो पता चले ना कि आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किए हैं इसमें, किस किस तरह से कहाँ कहाँ आप ये करते रह गए हैं। गजट शो आपके जॉब का कैसे कैसे हिस्सा रहा है जिससे आपको ये शौक़ हुआ कि आप हमारे DM डिजिटल पे ये सर्विस दें? राइट, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है फ़हीम। बेसिकली इफ़ आई लुक एट, मेरा बैकग्राउंड रहा है IT और टेलीकॉम्स में, और मैंने तकरीबन 14 साल का एक्सपीरियंस है मेरा इन वर्किंग इन डिफरेंट कंपनीज विच इंक्लूड सैमसंग, नोकिया एंड फुजित्सु. And having worked in these companies as a product manager or a country manager, over the years I've dealt with a lot of gadgets or products. Wow, that's nice. ये companies जो हैं मतलब काफ़ी well known हैं in the world, and आज आप अगर कोई चीज़ यूज़ करते हैं घर पे या इलेक्ट्रॉनिक या मतलब मोबाइल फ़ोन, तो ये कंपनियाँ ये चीज़ बनाती हैं। आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी हो गई है कि हर बंदा उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है। As a user, as a consumer, you use that technology everywhere. चाहे घर पे हो, ऑफिस में हो, कहीं भी बाहर हो, you use technology. And we have always thought of कि technology इस speed से आगे जा रही है कि some of us are not able to keep up with the pace. Exactly. And from that context, what we looked at was obviously at DM is that we should have something to talk about and share with our users, which basically जिस चीज़ के मतलब जिस प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग उनको ये बताएं कि ये नई चीज़ क्या है, क्या इसका यूसेज है और ये कैसे अपनी लाइफ में यूज़ करके उसको और ईजी और सहूलियत से यूज़ कर सकते हैं। हाउ टेक्नोलॉजी इन इफेक्ट बेटर्स योर लाइफ एंड हाउ इट हेल्प्स यू टू डू थिंग्स इन अ क्विकर, फास्टर, more efficient way and cost effective, and cost more effective important way, yes. So using obviously this show as a medium, we try and bring out new products, नए product लेके आते हैं, we get a lot of products for reviews, and हमने तकरीबन अभी 30-35 एपिसोड्स किए हैं, and इन एपिसोड्स में हमने काफ़ी सारे प्रोडक्ट लाइव रिव्यू भी किए हैं, and we get feedback from our consumers, our viewers on the TV, and they tell us what product they want to see. तो हमने काफ़ी सारी सीरीज़ करी हैं, and उसमें हम प्रोडक्ट्स लाइक लैपटॉप्स, IT एंड कंप्यूटिंग साइड हो गए, मोबाइल साइड हो गए, कैमराज हो गया, प्रोजेक्टर्स हो गए, सॉफ्टवेयर हो गई, एप्लीकेशंस हो गई, काफ़ी सारे अपने प्रोडक्ट्स का लाइव रिव्यू भी किया है। And it is let me put it this way, just to add that जो हमें feedback मिलता है through Facebook, Twitter or our blog or our website, we try and bring those products to our viewers, and obviously the idea is to share with them how they can use these products, and you basically use Gadget Show as a guide. अगर आपने कुछ खरीदना है या आपने कुछ if you are interested in buying something, then it's best to look at some of these reviews, make your mind up, get to know about the latest trends in the market, and obviously make yourself familiar with technology. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ व्यूज़, दरअसल मार्केट में जितनी भी कोई अच्छी, खूबसूरत और अफादियत की चीज़ें या अहम चीज़ें हैं,
उनको रमन साहब हमारे सामने लेके आते हैं और उसको बताते हैं कि ये क्या चीज़ है, इसका काम क्या है, ताकि हम उसको इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि टेक्नोलॉजी, जैसे रमन साहब ने बताया, रमन भाई ने, कि टेक्नोलॉजी इस पेस से बढ़ रही है कि हमें उसका अहाता करना या उससे पकड़ना कि कोई ख़ास चीज़ कौन सी नई इंट्रोड्यूस हुई है मार्केट में जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है या है, लेकिन हमें उसका पता नहीं चलता। तो हम रमन साहब अपनी समझ से, अपनी मर्ज़ी से उस प्रोडक्ट को यहाँ इस प्रोग्राम में लेके आते हैं, इसको ये समझते हैं कि ये हमारे फ़ायदे के लिए हो सकती है, जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है, उसके फ़वायद भी बहुत हैं और वो हमारे काम भी बहुत सारे आ सकती है। तो उसको फिर हम मुख्तलिफ प्रोडक्ट को रिव्यू करते हैं, जिस तरह के पिछले 35 एपिसोड्स में आपने देखा कि हमने मुख्तलिफ प्रोजेक्टर, मोबाइल्स, कैमरास, उसके अलावा और बच्चों की टेक्नोलॉजी, बच्चों की चीज़ें जो उनके ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छी हैं, मेंटल हेल्थ और एक्सरसाइज के लिए भी बहुत अच्छी हैं भी कॉस्ट इफ़ेक्टिव, और उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स बच्चों के ऊपर भी होते हैं। तो आज हम रमन साहब से पूछते हैं, प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ इस तरह से है कि हम पहले न्यूज़, जो टेक्नोलॉजी में होने वाली, टेक्नोलॉजी की वर्ल्ड, दुनिया में होने वाली न्यूज़ का तस्करा किया करते हैं और फिर हम प्रोडक्ट रिव्यू की तरफ जाते हैं। तो आज हम रमन साहब से पूछते हैं कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में होने वाली कौन सी हलचल से ये हमें दहलाना या हिलाना चाहते हैं। जी रमन साहब, बताइए कौन सी न्यूज़ आज हमारे व्यूज़ के लिए आप लाए हैं जो टेक्नोलॉजी में हो रही है। Right. As you have rightly said, Fahim, we normally start off with the news section, और इसमें आज we have about 3 or 4 main, big news which are which are being talked about in the industry. Number one, जो है, a lot of us use Facebook, and Facebook has made an announcement that they are going to take over a company called Instagram. Instagram, And right. Instagram का why it is in the news is because ये छोटी सी company, it started off in October 2009. In the US, and obviously it has the speciality of this company is that it develops color filters. So using this application on the iPhone, or if you have a phone, smartphone, Android or iPhone, अभी दो ही में available है, आप उसमें color filters apply कर सकते हैं on the photos that you have taken. Right. And the news is that Facebook has agreed to acquire this company in cash and stock for $1 billion. Wow. So इस कंपनी में तकरीबन 70 एम्प्लॉई हैं, and if you divide that sum by 1 billion, that makes that each employee in that company worth 79 million. Wow. So this is one of the biggest news in the market, is because Facebook, who is now as a company, they are going in for an IPO later this year, and that IPO is expected to be the biggest IPO on any stock exchange in the world. Some of the rumors are, and obviously we cannot speculate, but it says that they will be $100 billion company. So उसने ये दूसरा acquisition किया है in a short span of about 4 months, and as you rightly know that Facebook has started the photo service in the last couple of weeks along with timeline as a feature. Yeah. And perhaps that has made more complicated the use of the Facebook more complicated. Yes. I do agree, and some users, we get so used to the particular format that when you introduce change, it becomes difficult for you to adapt. In the beginning, absolutely. And right. तो ये एक acquisition उन्होंने announce किया है जिसकी value काफ़ी है, and we really don't know what they plan to do with this acquisition, because at the end of the day, when you look at photo sharing services which are already there in the market, like you had Flickr before this, and if you look at the iPhone, they have their own iPhoto, and that goes on other products as well. Right. तो ये एक service ऐसी उन्होंने acquire करी है कि जिसमें they will then drive it further along with the photo service, along with the photo sharing service on Facebook. And a lot of us rightly know that Facebook is the largest social network in the world, and with photos, they would be looking at driving some advertising at the back of it, or print photographs at the back of it. And surprisingly, a lot of analysis has happened behind it, and the analysis behind it is that Apple has also introduced something which is an application, and that Instagram from the iPhone allows you to choose photos, change the photos, and then you can print those photos through a service. Right. And that can be delivered right to your doorstep. Oh, right. So specialized pictures. So I think Facebook has taken that idea and would want to drive it forward. So this is the big piece of news that they've announced acquisition of Instagram, which is, I would say, a 2.5-3-year-old company with 70 odd employees for about $1 billion. That's the biggest news. Very nice. दूसरी जो बड़ी न्यूज़ है जो मार्केट में इस वक्त है, we are all familiar with a brand called Sony, and as you know that we have grown up with Sony. So अगर आपके घर पे टीवी होता था तो सोनी का टीवी होता था, बिल्कुल सही। अगर आपके पास वॉकमैन होता था तो सोनी का होता था.
that company has been going through a lot of transition in the last couple of years, and obviously they are trying to keep up with some of the Korean companies and the other companies which have given them a run for their money. Sony की technology काफ़ी अच्छी है, but you know, from the time Sir Howard Stringer has taken over as the chief executive, the company has undergone one after the other some sort of, you know, a reorientation and a restructuring. But lately they've announced that they will lay off 10,000 employees, which is a big number, a big chunk, in order to streamline costs and also make Sony profitable. So obviously a company that is very close to our heart, we are seeing that the company continues to struggle, but obviously it is not good news in a way for us, for the technology sector, because a number of jobs from that will also probably go across, you know, in our country as well, and people will, we will probably look at getting lesser products which Sony will manufacture themselves but outsource to other companies, and you know, that as a brand is shrinking. The third bit of big news is, we all know about Facebook and Twitter, and when we look at Facebook and Twitter, they are social networking services, but Google has been trying to make a dent in this market for a good number of years now. And this is one place wherein the massive advertising engine behind what Google does has failed to capture any sort of a significant pie on you know, social networking. So they launched a service called Google Plus, which was launched, you know, revamped and relaunched last year, and which has racked up about 40, 50, 60, 70 million users. But they're way, way behind the 800 million users which Facebook has. And in an attempt to catch up with Facebook and Twitter, they've introduced very similar features and introduced a last-ditch effort to revamp that service. So, agar main apna personally dekhu, why is it making news is, I've tried Google Plus in the last couple of weeks, and if they make drastic changes, as a user, I will go away from that service, because they've been making changes on this service for the last 6-7 months. So I know everything is happening for betterment, but at the end of the day, you as a user, you resist change. Agar wo काफी सारी चीजें change होंगी, so you know, you go away from that service. And that is in my opinion, personally, that's the reason why people are not adapting Google Plus, because they've tried to integrate YouTube, your Gmail, you know, your Google browser, and everything into a social networking service. But they've also introduced very similar features which is offered by Facebook and Twitter, and it needs to make a significant dent in terms of new things which will make it adopt. So product mein merit nahi hai is waqt. That is what I would say, you know. Right, okay. So again, an effort from their side. And one company which refuses to go away in the news, good or bad, is Apple. And this week they are in the news because Apple, if you've used an Apple MacBook or you know, an Apple iMac, they are PCs or laptops which are prone from, you know, not prone to I would say virus attacks. Antivirus usme nahi zarurat padti hai aapko, and they're supposed to be more secure because they have a Unix operating kind of a system, you know, as a platform. But of late, last week, some of the machines have been infected with the Trojan virus, and they have introduced a patch. And obviously this, as the Apple market share grows, you know, one of the reasons behind viruses and people writing these kind of programs was that 98% of the world's PCs ran Windows. But today, with the increasing popularity of Apple and the iPad and the iPhone and the iSystem, as I call it, the iOS system, you will see that a lot of these kind of threats will come live for Apple products as well. And I think this is one in many which will probably happen in the future. But you know, a cause for concern that, you know, if you're a Mac user like I am, and I'm absolutely sure that, you know, my system is secure, but having to read that news and find out that it's been affected or some of the systems have been affected, you do get a bit worried. Right. Okay. Because our lives rotate around the internet. आप browsing उस पे करते हैं, email उस पे करते हैं, banking उस पे करते हैं. So you know, you need something secure. And that's the last bit of news. You know, obviously good or bad, but you know, that company refuses to go away because it gets good or bad publicity either ways, and they are always in the news. Right. Thank you very much, Raman भाई. बहुत बहुत शुक्रिया. जी, रमन साहब का तज्जिया आपने सुना, ख़ास तौर पे फेसबुक जो इंटीग्रेट हो रही है इंस्टाग्राम के साथ. Does it worth it of $1 billion? $1 billion. ये इतना वर्थ है उसका? Well, that is what the debate is in the market. कि इसका worth इतना नहीं है.
और उसमें सिर्फ जो खास बात वो कर रहे हैं वो ये है कि कलर स्ट्रीम लाइन दे दी है कि कलर को मुख्तलिफ पिक्चर को कलर फिल्टर्स इफेक्ट्स दे सकेंगे, वो इफेक्ट्स दे सकेंगे अपनी तबीयत के मुताबिक, अपनी पसंद के मुताबिक। ये कॉम्बिनेशन है, ये भी फिर एक उसको जन्म देता है एक स्किल को, फोटोग्राफी के स्किल्स को या उसके आर्ट को, और फिर उसको आप मार्केट में यूज़ करके एट द एंड ऑफ द डे फेसबुक का बुनियादी मकसद अब एडवर्टाइजमेंट और मजीद अपनी वर्थ बढ़ाना, इनको इंस्टाग्राम को हायर करके या इसको इंटीग्रेट करके इस सूरत में इसी तरह से Well, plans अभी मालूम नहीं है, but whatever we get to hear and get to read is that obviously they will not lay off the current employees. They will integrate the service into Facebook, but in what shape or form is very closely guarded by Facebook. तो उसके बारे में हमें नहीं पता. But looking at कि Instagram की application क्या है and Facebook ने recently photo introduce किया है, और अगर आप ये देखेंगे उन्होंने जो photo sharing service introduce करी है उसमें you can upload high definition photos. Up to, you know, it is not low resolution, high resolution photos. So hopefully there is a match somewhere that they have thought of a business model which will help drive, you know, picture sharing as a service, some part of advertising revenues, and obviously, you know, app, because Instagram is now available on the Android phone as well. So Android, अगर आप देखें smartphones, about 500 million smartphones साल में बिक रहे हैं जी. So अगर वो 300 million Android phones में जा रहे हैं और आपका 70-80 million iPhone में वो application जा रही है, it's a paid application. I don't know about Android if they've launched it free or not, but there will be money to be made on both sides, from application revenue, from photo sharing service, and on the back of it, you know, obviously advertising. बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपके एनालिसिस का एक दफ़ा फिर। बुनियादी तौर पे मकसद फेसबुक और ट्विटर का बुनियादी तौर पे मकसद तो ये था कि मकसद ये है कि इज काइंड ऑफ फैसिलिटेटिंग द ग्लोबल विलेज प्रोसेस। आई टोटली एग्री कि किस तरह से लोग एक दूसरे को करीब से देख सकें, जान सकें, कोई कहाँ बैठा है और कोई कहाँ अपने शेयर्स कर सकें आइडियाज़ को, अपनी पिक्चर्स को। और इस फेसबुक के सारे इस प्रोसेस में जो सबसे खूबसूरत चीज़ जो फेसबुक में शेयर होती है वो होती हैं पिक्चर्स। अब पिक्चर्स में मज़ीद जान डालने के लिए उन्होंने इंस्टाग्राम को हायर कर लिया, और इंस्टाग्राम को हायर करने या इंटीग्रेट करने से पहले उन्होंने टाइम लाइन शुरू कर दी है जो एट द एंड ऑफ द डे पिक्चर के इफेक्ट को मज़ीद हाईलाइट करेगी। आई टोटली एग्री, यस। इसीलिए ना टाइमलाइन का सबसे बड़ा है कि पिक्चर्स को इफेक्ट्स को मज़ीद गहरा करके या उसको मज़ीद इफेक्टिव बनाने के लिए, तो दिस इज हाउ बिजनेस पीपल आर थिंकिंग एंड टेक्नोलॉजी इज आई टोटली एग्री, बिकॉज अगर आप देखें टाइमलाइन का कॉन्सेप्ट में ये है कि वो आपको इट अरेंजेस एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ पिक्चनरी, राइट, एंड अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स एज दे से। सो अगर आप कोई चीज़ पिक्चर्स के माध्यम से देख रहे हैं, so it becomes easier, right? And the reason why, you know, it's a good topic that we are discussing this Twitter and Facebook today is because a lot of us, you know, if I look at my parents, they want to be on Facebook, you know. So the first question which goes out to them is, why do you want to be on Facebook? Right, absolutely. आपको क्या उसमें interest है? बिल्कुल सही बात है. And one of the things which they say is that today, if I have to look at, you know, you or your, you know, your family or your friends, the best way for me to look at is if I become friends with you on Facebook. So आप कुछ भी activity करते हैं, whether you read, you know, put an article, whether you participate in an event, whether you participate in a poll, और अगर आप अपने कुछ photos upload करते हैं, अपना thought process पे लिखते हैं, तो they can straight away share or see it if they are added to you as a friend. Exactly. And that is the whole concept of social networking. That means एक टाइम था कि आपको इनकलाब और यू नो दिस काइंड ऑफ थिंग्स लाने के लिए आपको नारेबाजी करनी पड़ती थी टू गो आउट इन द मार्केट एंड ऑल दैट स्टफ। बिल्कुल सही। बट टुडे यू कैन ड्रम अप अ लॉट ऑफ पब्लिसिटी, अ लॉट ऑफ फॉलोइंग just by using these social networks. Absolutely. So if you have a good cause and you create a group or you create a page, and if you're a business or you know you're an individual or you're a charity organization, you can do different forms of things on Facebook. So आप application के माध्यम से, page के माध्यम से, business के माध्यम से और personal account के माध्यम से you can go on to the Facebook. सही. And once you are on there, you start networking or you start connecting with your friends, family, near and dear ones, acquaintances, and you create a network. And in a way, over a point in time, if somebody is regular, they can go up to about 5,000 users, and you can instantly make sure that your thought process reaches out to about 5,000 people, and that further branches out to their own friends and family. So it's a big global village, as you've rightly said, and everybody wants to be on Facebook. Absolutely, and it has also made very easy for us to do the networking. और networking views आपको बताते चले, आज की दुनिया की सबसे बड़ी स्किल नेटवर्किंग। पहले ये होता था कि लोग ये देखते थे कि आपको कौन जानता है, यानी आप किसको जानते हैं, लेकिन अब फेसबुक ने और दूसरे इन सोशल नेटवर्क ने ये आसान कर दिया कि आपको यानी कौन जानता है और किस तरह से आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं नेटवर्किंग के ज़रिए से।
राइट, हम बात कर रहे हैं फेसबुक की, हम बात कर रहे हैं ट्विटर की बढ़ती हुई वैल्यूज़ की, जिसमें हम अपने आइडियल्स को, अपने दोस्तों को, अपने फैमिली फ्रेंड्स को, क्लोज नियर एंड डियर्स को, जैसे आपने फरमाया, उनको हम फॉलो कर सकते हैं, उनके थॉट प्रोसेस को देख सकते हैं। और इन्होंने मार्केट इतनी ज़्यादा हाईजैक की हुई है, ये यूँ समझ लें मोनोपोली की हुई है। तो गूगल जो एक पहले से बहुत अच्छा काम कर रहा है रिसर्च के हवाले से, डॉक्यूमेंट की अवेलेबिलिटी के हवाले से, मुख्तलिफ रिपोर्ट के एक्सेस के हवाले से, या नॉलेज शेयरिंग, प्योरली नॉलेज ये स्कॉलरली एक आइडिया दे रहा है, वो इस मार्केट में इंटीग्रेट होने की कोशिश कर रहा है। जो गूगल प्लस उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया इसी तर्ज का, फेसबुक का या ट्विटर के तर्ज का पिछले कुछ अरसे में, जिसको आप भी यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने अपने तज्जिए में, अपने एनालिसिस में पहले भी बताया कि बड़ा हार्ड होगा गूगल के लिए कि वो उसको कोप करे या उसको फेस करे। तो कि क्या समझते हैं कि किस तरह से इसका सोशल फ़ायदा ओवरऑल होगा हमारी कम्युनिटीज़ को या यूज़र्स को? See, if you understand that at the end of the day, Google started off as a search engine. So and they've always said and maintained that they will never allow advertising on the home page. So when you type Google, you get nothing, and it quickly loads up. The reason why Google is very popular and they've been able to successfully drive revenues through advertising is because of the search and the speed at which it provides you the search. Over the years, Google is one of the companies which has acquired in excess of, I think, 55 companies. Same. And some of the biggest acquisitions they've made over the years, includes YouTube. So if you see, they have been kind of in this field already from a point of view of, YouTube. If you look at YouTube, you can make any kind of a video and you can upload it subject to certain terms and conditions. So it cannot be obscene and, it conforms to certain guidelines. And then people get onto it. So it's a video sharing service. So they were already making inroads into this, but they never thought of that networking or social networking will become so personal. If you see, Facebook started a couple of years back in 2001-2. Harvard dropout, Mark Zuckerberg started a company, and it started off as an idea in a college, Harvard network, and then it branched off, and then branched off in a couple of years, and I would say 10, 11 years, we will see an IPO of a company which will probably reach $100 billion, right, in terms of valuation. Now, if you see Google, they started off maybe a couple of years before that, and that company has been successfully driving revenues through advertising. And advertising is in the form of search, paid advertising, pay-per-click advertising, different forms. Right. But what they have tried to do now is, because they have a lot of these services, they're trying to integrate all of them together. अगर आप आज की डेट में देखें, browser if you use, and you go on to 10 different websites and you have 10 different accounts, you sign in, but you sign in your username and password and you forget that. So a simple functionality aayegi, the browser remembers your username and password. Similarly, Google integrated something like browsing history. So if you are signed in with a Google account, it keeps your browsing history, and then it allows you to use those accounts anywhere across the any type of product. अगर आप आज PC यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आपके बुक मार्क्स उस पर अवेलेबल हैं, कल लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो वो सारी हिस्ट्री उस पर भी अवेलेबल है. So in a way, what I say is कि they are trying to integrate all their services. Right, okay. And the whole objective of that is that at the end of the day, there are finite number of users on the internet, and those users need to be served the right amount of data. मतलब आप अगर suppose आप घर खरीदना चाह रहे हैं and आप घर की बारे में सर्च कर रहे हैं, you're searching for mortgages, for example, as a product. So Google is such an intelligent engine now, because the algorithms are written in such a way that it will bring up searches for those kind of things that you're browsing for, and it then learns quite quickly. So from that angle, they are now trying to make one end of the market meet the other. So as a customer, you're trying to get mortgages, and there are companies who are signed to sell mortgages as a service, and the search engine is making that happen, is bringing them together. So if you look at number of users in terms of search engine, Google is number 1, followed by Bing, followed by Yahoo. But Google's market share is in excess of 50 to 60%. Right. And when you look at that and you multiply that by the number of people using PCs, they do see that they can significantly make a dent and capture a part of that market as well, wherein that can be used to promote social networking, photo service, video sharing service, email, whatever they want to do. And all the back of it, they want to drive advertising revenues. Right. So the whole battle is about acquiring consumer. अब एक time था कि आप TV पे consumer acquire कर रहे हैं, you are also now acquiring consumers on the internet.
Right. And Absolutely. the more you have them hooked on with your service, it translates into more money, money per user. And that concept is very true when you convert that to mobile phones. सही. So अगर आप Facebook यूज़ करें मोबाइल फ़ोन पे continuously आप नेट यूज़ कर रहे हैं, 3G नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, the operator usage goes up, आपका बिल बढ़ रहा है, आपकी browsing history बढ़ रही है, so you're paying more bill. So in a way those applications are helping mobile operators make more money. So it's a part of a full ecosystem wherein it starts with search, goes into advertising, connecting, social networking, more usage, more bandwidth, and then finally money going across the pipe. Wow, that's very nice. So sweet of you, Raman Bhai, for being with us and explaining the complexities of the technology and trying to make it easy for us. However, it is not that easy because of our path dependency indeed. But however, your efforts will